जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहिब, रूस में खुशामदीद। मुहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, हम गिमो यानी मॉस्को इंस्टीट्यूट बराए बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के तालिब इल्म हैं। यहाँ हम उर्दू ज़बान सीखते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख़, सकाफ़त, मईशत, जोग्राफ़ियाई अहमियत और सियासत का मुताला करते हैं। आज हम अपने वतन अज़ीज़ के दरुल हुकूमत में आप और आपके वफ़द का खैर मक़दम करते हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहिब, हमें उम्मीद है कि आपका दौरा कामयाब होगा और मॉस्को में आपका क़याम खुशकुन होगा। रूसी क़यादत के साथ आपकी मुलाकातों के नताइज का इंतज़ार हम बहुत इंहिमाक से कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रूस रवाना होंगे। मॉस्को आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामिक सेंटर मॉस्को का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा आज वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रूस रवाना होंगे और उनकी क्या मुलाकातें और क्या स्केड्यूल रहेगा उनका? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को रवाना होंगे और उनका ये दौरा जो है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की खुसूसी दावत के ऊपर हो रहा है। इस हवाले से जो दफ्तर खारजा की जानिब से तफसीलात जारी की गई, उसके मुताबिक ये किसी भी पाकिस्तानी लीडर का मॉस्को का वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देखा जाए तो 23 बरस बाद होने वाला पहला दौरा है। और उसके बाद इससे पहले 2011 में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बतौर पाकिस्तान के सदर के मॉस्को का दौरा किया था। तो एक तवील अरसे बाद दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है मॉस्को में आमने सामने बैठेगी। एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है जिसमें कैबिनेट मेंबर्स भी शामिल हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद होगा। और इसकी जो यकीनी तौर पर जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हाईलाइट होगी इस दौरे की, वो एक बायलैटरल समिट होगा प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान। उसमें जो इत्तलात मिली हैं मॉस्को से वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म को मॉस्को आमद के ऊपर एक गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। रूस के मुमकिन तौर पर नायब वज़ीर खारजा जो हैं वो मॉस्को एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल करेंगे। और परसों क्रेमलिन में ये मुलाकात होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की। 1-on-1 मुलाकात भी होगी, वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी और ख़ास तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान जो है तवानाई के हवाले से, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से और दिफा के शोबे में ताउन के हवाले से बातचीत होगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये भी स्टेटमेंट सामने आई है कि वो माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले से और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से भी रिशन हकाम के साथ बातचीत करेंगे। और इस वक्त यकीनी तौर पर जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है, जिसके अंदर अफगानिस्तान का मामला है, रूस के वेस्टर्न फ्रंट का मामला है, जिसमें हम देखते हैं कि सूरत हाल जो है इंतहाई पेचीदा है, रूस और मगरबी ममालिक आमने सामने आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर बायलैटरल उमूर के साथ जो है इलाकाई और आलमी उमूर हैं, उनके ऊपर भी इस विजिट के अंदर तबादला ख्याल होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया। सलमान अली अवान हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आज हम यहाँ पे डेप्यूटी एडिटर हैं एंटन एनिसमोव, उनसे बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजिट है वो कितना इम्पोर्टेंट है और दुनिया से क्या रिएक्शन आ रहा है। एंटन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you for having me. Prime Minister is coming tomorrow and he's meeting President Putin day after tomorrow. Yes. And so how the Russian media is looking at this visit? What I'm thinking is there's been a certain gap in coverage, in covering news from Pakistan. But since the region is becoming more interesting now, seeing what happened in Afghanistan just recently, and that we have more things to discuss now. Because the last visit, if I remember it correctly, was some 22 years ago. Yeah. I think it was like 1999. So a lot of time has passed, really. But I think we can, like, what the countries are looking at now is we need to pick up the pace and just pick up where we left and continue with it. Major areas, do you think, like the major project where we, of course, Pakistan is desperate to have gas. We have got energy issues. Yes. And we understand that you are going for nuclear energy projects in India. So is there any preference for Pakistan in that area as far as energy sector is concerned? Well, I cannot speak on behalf of the Russian Of course, Federation when we talk about energy, but I think like Russia and this has been reiterated numerous times by our leadership, that Russia is willing and ready to work with any party that is interested in mutually beneficial relations in regards, in terms of nuclear energy or be any other energy, as well as the gas pipeline. Gas pipeline is a very interesting one because
as you know, the what's the name? It's the energy transition that everybody's talking about, and it's been a big issue lately because we need to go green, and the natural gas, is one of the greener for now energy sources that Russia can provide. So as well as nuclear energy, of course, but discussing the gas pipeline is of course a big issue now. What's the reaction from the major capitals of the world on Prime Minister Imran Khan's visit to Moscow? From the major capitals of the world, I think any country, In particular, Delhi. It's hard to say. I think like what's happening in India, Indians are very, and I think it's the same for Pakistan really. Your countries are very, your relations are really intertwined. So you both are following each other very closely. So of course in India they're gonna look at what's happening in Russia, and the Prime Minister's visit, Imran Khan's visit to Moscow, is going to be of great interest to them. Anton, can we say that Delhi is curious to know what this visit would transpire into? Well, I cannot say on behalf of Delhi. No, but really. You're getting queries from your stingers. You've got a major office in Delhi. I think it would be understandable if Delhi was interested in the visit of your Prime Minister to Russia, of course. So I've heard Prime Minister Imran Khan's visit to some Russian newspaper, and he said he would be more interested in talking on the climate change and environment issues. Is that a major area where Russia is working on? Well, I think climate change as an issue is now very tightly related to the energy transition that we're talking about. So there comes gas and there comes the nuclear energy, and that's, I think, like the climate issue in itself. Well, it is a big issue, but bilateral relations in terms of energy and selling natural gas and buying natural gas is where it's like, I think it's the main focus right now. Did you have interaction with the government officials, the Russian officials, if they are looking for any investments, in particular CPEC, China-Pakistan Economic Corridor is widely talked in the world? I have not talked to, I have not discussed it recently, so. Thank you, Anton. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. नाज़रीन, आपने एंटन की गुफ्तगू सुनी. एंटन ने सारे एरियाज कवर किए और इन्होंने हमें बताया कि यस, मतलब दिल्ली में यकीनन सवालात होंगे उनके, और वो क्यूरियस भी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजिट के. लेकिन रशियन मीडिया इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा है, बिकॉज जो भी बायलैटरल आगे जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और रशिया के, अगर उनमें बेहतरी आती है तो ये इनके फेवर में भी है. एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है. गैस पाइपलाइन एक बहुत दरीना, बहुत अरसे से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, और कहा यह जा रहा है कि इस दौरे के बाद, इमरान खान के दौरे के बाद, इसमें भी कोई ब्रेक थ्रू होगा. मज़ीद भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ रहिए.